Okay. Would you like to ask questions, or you want me to directly? I think. I'll just. Yeah. Good afternoon, sir. Today, my first question is, so what is the latest update from the rescue mission that is again supposed to take place? So as you are aware, we have conducted almost a month-long search and rescue operation for the missing mountaineers, Shri Tapimara and Shri Nikudao, and we have given continuous updates on it, and we have also conducted a joint press briefing along with the Indian Army, stating clearly what are the reasons for terminating that search and rescue operation in the current situation, because the weather is getting very bad and there is intense snowfall. There are continuous avalanches happening over there, and therefore keeping the safety of the rescue members, team members, as a top priority, we had to end that, to terminate that mission. Thereafter, a request for airlifting of the some other mountaineers who are also some family members of Shitapi Mara. We have received it through Chief Secretary Sir's office. But I would like to tell that we are sending a proposal from here to the state government, because the decision has to be taken by the state government, because entering into such an area of high altitude area of almost 17,000 feet with so many people is almost like another expedition. There are many guidelines in place, there are many safety precautions which have to be taken in place. So we will be sending the proposal to the state government, and the state government will take an appropriate decision on that. सर जो तपी मारा सर है उनको काफी गवर्नमेंट की तरफ से रिपोर्ट उसके फैमिली को जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने भी खुद बुला के बात किया हुआ है, और जब हमने नीकू दाव के फैमिली से बात की, उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी कंसर्न अभी रही है कंसर्न मिनिस्टर ने उनको कॉन्टेक्ट करने की कोशिश नहीं किया गया। तो सर अगर इन केस का बाद अनफॉर्चुनेटली कुछ इंसिडेंट होता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ उनको लाइक कंपनसेशन कुछ इनिशिएटिव किया जाएगा? Now, district administration will only submit the proposals to the state government as per the norms. Whatever has to be decided will be decided at the state government. We are only involved in the search and rescue operation. Baki jo issues hai, that will be decided at the state government. So there is some allegations from the Kapimara family कि आप लोगों ने cooperation नहीं किया operation, उसके कारण से जो mission है वो fail हुआ। I have no comments on that matter. Next question. So, when is the latest planning, the possibility that the search and rescue operation can be carried out without the risk? That has to be decided by the state government. Any message to Niku Dao's family members? Anybody, so not just Nikudao, all the family members, we just want to give one single message, that the entire district administration, including the local community based organizations, were deeply concerned about the case of these missing mountaineers, and not just professionally. We have gone to the extent of putting our own personal efforts, and in fact I myself have signed an indemnity bond to fly in the helicopter and go into that hostile environment to check for myself what kind of conditions there are. So many lives have been involved in this. We have taken an undue amount of risk, and we have done everything humanly possible to find some clues about the missing mountaineers. The situation, the weather conditions and geographical condition are such that there is a very little chance of actually getting any further clue without in a way, the situation is in such a way that we will be putting the life of the rescue members at risk if we continue to push them forward into the dangerous conditions. So therefore the entire operation has been carried by the Indian Army, and as playing the leadership role in the operational aspects, the Indian Army has given us reports both through helicopter recce's as well as from the ground, stating that the conditions are very, very dangerous, and therefore keeping those reports in view, we had no other option than to terminate this mission for the time being. So what needs to be done later on will be decided by the state government. So as you are aware, in 2021, government of Arunachal Pradesh has declared that year as year of education under मिशन शिक्षा. So उस मिशन शिक्षा के अंदर में हमारा अरुणाचल प्रदेश में, स्पेशली ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में, एक स्पेशल प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है. प्रोजेक्ट्स नेम इज कॉल्ड एज द प्रोग्राम फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ
school complexes. So I would like to start with the genesis of the project. Genesis of the project ये है कि that when we went to some school visits and we started asking one very basic question to all the stakeholders in the school as to what exactly is a good school. So every student present there, teacher present there, community members present there have their own particular view of what a good school is. This we recognized as a fundamental problem in improving the quality of schools or the school education in our district. Because let us say, for example, if we have a football team and each football team member is looking at different goalposts, then the team can never win. So as a team at the community level, be it field functionaries like BRC, CRCs, or be it the teachers or the students or the administrative officers, we all wanted each and every person to speak the common language of school quality. So we have adopted the school standards framework called as the Shala Siddhi, and for the last 1 year, choosing SEPA education block as our pilot block, we have imparted training for the community members, teachers, and also the field functionaries on how to effectively use Shala Siddhi for school evaluation. So I am showing here, these are some of the Shala Siddhi assessor notepads. Shala Siddhi covers 7 different domains of the school education. So इसका benefit ये है कि teacher हो, student हो, field functionary हो, जो भी हो, everybody will have a common understanding of what a good school should look like. And once we have a common understanding of what a good school should look like, we can also go for assessment of where our school currently is. और इस assessment को अच्छी तरह से करने के लिए एक triangulation method भी हमने adopt किया है. So इस triangulation method में there is an internal assessment of the school which is done by the teachers and the students and the SMC members, and there is an external assessment of the school which is done by the complex leaders. So ये school complexes जो है, this system has been recommended in the new education policy 2020, and in East Kameng District so far we have created 2 school complexes comprising of 11 to 12 schools each. So each school complex comprises of primary schools, middle schools, all the way up to the higher secondary schools, and that school complex can work as a unit, share resources within the school complex, and take certain decisions which are beneficial or which are required for the development of the schools within that complexes. So this using this Shala Siddhi, therefore we have done reviews of all the schools present in SEPA educational block, both internal reviews and the external reviews in the month of September 2021. And after doing the reviews, in this Shala Siddhi, there are 7 domains and each domain में अलग-अलग parameters होता है. For example, with respect to the domain on teaching learning methods or enabling classroom environment. So there are multiple parameters on the enabling classroom parameters for which there are no requirement of funds to be coming from Government of India or for the state government also. For example, using better quality of teaching learning material can be done completely at the school level, और उसके लिए ज़्यादा फंड ज़रूरी नहीं है और स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी डिपेंड होने का ज़रूरी नहीं है. तो हमने स्कूल्स को ये टारगेट दिया है कि द स्कूल्स शुड सेट 1 पैरामीटर एज देयर गोल and improve their performance from level 1 to level 2 in 1 academic year. So all the schools that we have surveyed in SEPA educational block, they have chosen one or the other parameter which they felt is the most important parameter for their school, and they have to show evidence of improvement on Shala Siddhi framework from level 1 to level 2. So we have concluded 1 year of this project, phase 1 in SEPA educational block, and almost 70% of the schools have actually shown evidence of improvement from level 1 to level 2. And we have seen extraordinary efforts from the teachers and also the field functionaries like BRCs and CRCs and also community leaders. कुछ cases ऐसा है कि जहाँ पे let us say for example the midday meal kitchen is not working, the community leaders have taken initiative to renovate that midday meal kitchen. जहाँ पे classroom में अच्छा teaching learning methods नहीं है, वहाँ पे हमने देखा है कि teachers have come up with innovative methods like using of flashcards, या कुछ टीचर्स बैम्बू को यूज करके दे हैव प्रिपेयर्ड नंबर्स, कुछ टीचर्स दे हैव यूज्ड दिस लोकल ट्रेडिशनल बीड्स टू एक्सप्लेन काउंटिंग, एडिशन, सबट्रैक्शन टू द स्टूडेंट्स. So with these kind of innovative techniques, there are many schools which have actually shown evidence of improvement from level 1 to level 2, and बाकी schools भी within 1 or 2 months we are confident that they will be able to show this improvement from level 1 to level 2. और इस सिस्टम को सस्टेन करने के लिए और अगले साल भी इस सिस्टम को कंटिन्यू करने के लिए हमारा जो फील्ड फंक्शनरीज है
especially BRC CRCs, they have worked very tirelessly in the SEPA educational block, और बाकी एजुकेशन ब्लॉक में भी इसको कंटिन्यू करने के लिए BRCs और CRCs के लिए हम लोग ने 1.5 months का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हमारा ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट किया है, और इस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में बोथ थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स बोथ इन्वॉल्व है। तो फेज 2 में इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए हमको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के द्वारा कुछ फंडिंग मिला है, और इस प्रोजेक्ट को सिर्फ सेप्पा का 6 एजुकेशनल ब्लॉक्स में नहीं, पाके केसांग में भी 2 एजुकेशनल ब्लॉक्स में हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो और इस प्रोजेक्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ऊपर कॉन्फिडेंस रख के स्टेट गवर्नमेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यहाँ पे हमारा नॉलेज पार्टनर जो भी है अध्ययन क्वालिटी एजुकेशन फाउंडेशन, और उन लोग का कंसल्टेंट्स को भी हम धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जितना भी कम्युनिटी लीडर्स है और SMC मेंबर्स और BRC CRC से जो मदद किया है ये प्रोजेक्ट को सक्सेस करने के लिए, उन लोग को भी, स्पेशली कम्युनिटी लीडर्स को, आई वांट टू थैंक देम एंड आई वांट टू कंग्रेचुलेट ऑल द अचीवर्स। और जहां जहां पे स्कूल्स ने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखाया है, एविडेंस ऑफ इंप्रूवमेंट, और उस स्कूल्स को हम और अच्छा से मदद करने के लिए और इंसेंटिव्स देने के लिए हम प्लान कर रहे हैं, और वो भी हम करेंगे। और इस प्रोग्राम का अभी फेज 2 चल रहा है, एंड आई एम 100% श्योर दैट बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर, even despite having limited resources, our teachers and our field functionaries will be able to improve the quality of education with whatever conditions we have in East Kameng District. Thank you very much. Sir, एक क्वेश्चन है मेरा सर। This is about year of e-governance, year of e-education 2021. E-governance. Year of education 2021 सर। Yes. ये जो आप बता रहे हैं सर, ये शाला का जो ये न्यू एजुकेशन जो आपने ये सिस्टम लाया है यहाँ पे सेप्पा ब्लॉक पे, सेप्पा पे, तो सर जो इस बार का जो ईयर डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट ने ई गवर्नेंस, करेक्ट। सो व्हाट इज द अपडेट ऑफ इंटरनेट फैसिलिटीज इन ईस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट सर, इफ यू आर अवेयर ऑफ दिस? So internet facilities in 2020 itself we got 4G connectivity in East Kameng District, and in 2021 we got 4G connectivity both in Bameng and Chaingtacho. One of the major infrastructure problems in East Kameng District is power facility, और उसके लिए भी PGCIL का कॉम्प्रहेंसिव स्कीम फॉर स्ट्रेंथनिंग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का स्कीम चल रहा है, एंड नेक्स्ट 2 to 3 months में वो प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। और USOF के अंदर भी देर आर मेनी प्लेसेस वेयर मोबाइल टावर्स आर बीइंग सेट अप, सो एज सच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बामेंग एंड चांगताचो में भी इंटरनेट अवेलेबल है, बट पावर का वजह से उसका स्टेबलाइज अभी तक नहीं हुआ है, एंड आई एम श्योर की दैट वंस दिस पावर इशू इज फिक्स्ड, इंटीरियर एरियाज में भी इंटरनेट का कुछ भी दिक्कत नहीं रहेगा। साथ साथ में जितना भी हमारे यहाँ पर डिपार्टमेंट्स है, पूरा डिपार्टमेंट्स का ई ऑफिस में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेसेस हम कंप्लीट करना है बाय क्रिएटिंग देयर एम्प्लॉयमेंट दिस द फाइल डेटाबेस हो या उन लोग का डिजिटल सिग्नेचर्स हो, पूरा हमने प्रोसेसेस यहाँ पे कंप्लीट किया है। ऑलरेडी देर आर मेनी डिपार्टमेंट्स विच आर सेंडिंग मी फाइल्स ऑन द ई ऑफिस, एंड मोर डिपार्टमेंट्स विल कंटिन्यू टू स्टार्ट वंस देयर डिजिटल सिग्नेचर्स आर ऑब्टेन्ड। वन मोर क्वेश्चन सर, आपने ये जो बताया काफी इंटरेस्टिंग जो स्कूल का ये जो सुधार लाया है, if other district wants to apply this or other district wants to work on this, how should it begin from? Where should it begin from? Yeah, as I said, the most basic question is to answer what is a good school. एक अच्छा स्कूल मतलब क्या है? तो यहाँ पे I'm sure there are 7 to 8 reporters and all. Each one of you will have a different opinion as to what is a good school. So that is the most good basic question. So I think using an objective framework of evaluating a school will be the most fundamental step for school improvement. उसी से हमको पता चलेगा कि exactly हमारा स्कूल कैसे होना है और उसका हालत प्रेजेंट स्टेटस क्या है। तो वो प्रॉब्लम को अच्छी तरह से हम डायग्नोस करने से वही 50% ऑफ द सॉल्यूशन है। तो हम चाहता है कि कम्युनिटी मेंबर्स हो, टीचर्स हो, जो भी हो, एवरीबडी शुड बी लुकिंग एट द प्रॉब्लम इन द सेम वे। तो अदरवाइज दे विल ऑल थिंक कि दैट देयर आर डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड सबका एफर्ट्स डिसिपेट हो जाएगा। तो एवरीबडी इफ दे थिंक दैट दिस इज द एक्चुअल प्रॉब्लम, देन एवरीबडी विल स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। सो इसके लिए जो कैपेसिटी बिल्डिंग जो हमारा एक्सपीरियंस में हमको ये फीडबैक मिला फील्ड से कि दैट देयर इज अ लॉट ऑफ नीड फॉर ट्रेनिंग स्पेशली अमंग द फील्ड फंक्शनरीज एंड टीचर्स। तो इसलिए हमने एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, एक कॉम्प्रहेंसिव सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का मॉड्यूल बना दिया, और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में अगर अडॉप्ट करना चाहते हैं तो दे कैन स्टार्ट विद दैट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम फॉर द BRCs and CRCs।